ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो वीक 2 का जो कंटेंट है वो आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा जो बेस है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द बेस जहाँ पे विल लर्न अबाउट द लाइंस। ओके, विल लर्न अबाउट द पैरेलल लाइंस, we'll learn about the perpendicular lines. Then we'll learn about the angles between the lines. Then we'll learn about the, the area of the triangle. And actually this is very, good concept. And as I'm seeing all the, the content from the IITM side. So, in area of the, the non-graded assignment, they have put this type of question like finding the area of the triangle or like that. Okay. So let's start with the coordinate geometry. Basic से करते हैं start. Okay. So now mostly, everybody, अगर किसी के पास मैथ भी नहीं है 11th-12th में तो उनको भी पता है what is the coordinate geometry. So like whenever you have the 2D, 2-dimension geometry, right? So there are two plane actually. I mean the one plane only. And actually what happened there? There are two axes. One we call the x-axis. Another we call the y-axis. ठीक है, बट अगर एक्स एक्सिस है तो वहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस भी है एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो वहां पे नेगेटिव वाई एक्सिस भी है, राइट? ऑन दिस एक्स एक्सिस, ऑन दिस गाइस, किसी का ना प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस भी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो नेगेटिव वाई एक्सिस भी है। ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट होता है, राइट, उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? एक्स एंड वाई का फॉर्म में लिखते हैं, राइट? वे x बिलोंग्स टू द x कोऑर्डिनेट जो भी है, y बिलोंग्स टू द y कोऑर्डिनेट, राइट? अगर मैं बात करता हूँ ये जो एक लाइन है, ठीक है, लेट मी मेक अ क्विकली ग्राफ सिस्टम देयर। ओके, सो इसी पे बनाते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। x y नेगेटिव x नेगेटिव y, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं, we also called it origin, right? Like the number line, we mark the point like 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6. This is -1 this side, -2 -3 -4 -5 -6 and -7, like that. This is positive 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so अगर मैं बोलता हूँ कि how do you plot let's say 3 and 3. Okay, so here if you see the coordinates, so x is what? 3 and y is what? 3 as well, right? So you can just mark the 3 on the x-axis. This is here. You can just mark the y 3 on the y-axis. This is here. Okay, and then if you so this point is 3. Means you're not sure about CBIT.
Okay, so this point is 3 and 3, and that is in the first quadrant. So these are the quadrant, like first quadrant, this we call the second quadrant, this we call the third quadrant, and this we call the fifth quadrant. Right? So now the question that comes in the generally in the exam, it can be like, suppose we have given some points and the question may ask, okay, this point is related to the which quadrant. So first of all, you need to understand, the first point is always what? The x coordinate, and the second is what? The y coordinate, right? So here in this one, if we take the x as the first, so x is negative here. So this is negative and this is positive. Here negative and negative. In the fourth one, x is positive and y is negative. Right? You need to remember this. Also, suppose they give you, okay, they may give you something like this. What, if they give you 3 and 0. So this point is on which quadrant? If they ask you 3 and 0. So first of all, you need to understand where is 3 and 0. So x is 3 there and y is 0. So y is not going anywhere, right? So y is 0. So this point only is 3 and 0. So now you need to tell where is this point? This point is in which quadrant? So this point is not in the quadrant. This point is on the x-axis. This point is on the x-axis. This is not on the, not in any of the quadrant, right? So you need to remember this. Okay, guys, let's move to the next. So next, basic is, the distance between two lines. Distance between 2 points. Okay, suppose you have given any 2 points. Let's start from the origin case only. Okay. Suppose if I ask you, what is the distance between 0, 0, 3 and 4? Okay, if I ask you, what is the distance between 0, 0 and 3 and 4? So 3 and 4, first of all, mark the point. X is 3, y is 4. So this is the point, 3 and 4. What do we need to find? We need to find this distance between the origin and the 0, 0. Correct? So how can we find that? If you know the formula, that's very good. If you don't know the formula, what you can do, you can make a, a triangle there, right angle triangle. So you make a perpendicular there like this. So this definitely, this distance is what? Because this is x coordinate. You can say the x-intercept as well. So this is 3 and this is 4, right? Now, as you know, this is perpendicular. So you can use the Pythagorean theorem. So if you use the Pythagorean theorem, so what you get? AB square is equal to BC square plus AC square, right? So this is going to be 3 square plus 4 square. That is AB square. And AB is square is equal to 25 and AB is equal to 5. And always remember 3, 4, 5 are the Pythagorean triplets. Okay. Same as 5, 12, 13 are the Pythagorean triplets. And the good thing is all the multiple of these numbers is also the Pythagorean triplets. So अगर मैं बात करता हूँ उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों नंबर को, तो that is 6, 8, 10. तो ये भी क्या है? Pythagorean triplets हैं, right? अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ या सपोज 10 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30, 40 and 50, तो ये भी Pythagorean फॉलो करते हैं. अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो that becomes 45, 60, 75. So these 3 numbers also follow the Pythagorean, rule, the theorem. Same here, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10, 24 and 26, right? So these 3 numbers also follow the Pythagorean triplets. So याद रखना 3, 4, 5 and 5, 12, 13 is the very basic, and 7, 24, 25 is also the Pythagorean triplets. तो ये काफी basic हैं, right? Remember all these always. ठीक है? Is there any doubt? Now, अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला कैसे निकालो? ठीक है? Let me try the formula for you guys. Okay. Suppose I have the 2 points. The 2 points are, the one is the x1, y1.
Okay, suppose one point is x1 and y1. Suppose this is A, this is B. A point is x1, y1. B point is x2, y2. Right? What do we need to find? We need to find the distance between A and B. Right? ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, एक परपेंडिकुलर बनाते हैं इधर से भी और इधर से भी. So we make like this, and we make like this. Okay. This point we generally say this is ABC. Okay. अब now you need to understand what. So अगर आप देखते हो यहाँ पे यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x1. यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x2. Right? If you see here, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, you can say y1, और यहाँ पे कितना है, y2. We already know. Right? तो A to C का डिस्टेंस कितना हुआ, x2 minus x1. Right? What is the A to C or AC? That is x2 minus x1. Same here. What is B to C का डिस्टेंस कितना हुआ? Because this point is y2, this point is y1, so definitely y2 minus y1. Okay, guys. Now, what do you need to find? AB. ठीक है. So again, this is 90 degree. Now let's start with the Pythagorean theorem. So we have the AB square is equal to BC square plus AC square. Again we'll use this. ठीक है. तो BC we know that is y2 minus y1 square and x2 minus x1 square. Right. So now you take the square root both sides. So you get under root of y2 minus y1 square plus x2 minus x1 square. And this is the formula for the distance between 2 points. Distance between 2 points x1 y1 and x2 y2. Right, guys? So this is, you can also try like how to find the distance between 2 points there. Right? Also AB, I got this, right? But AB can be equal to, you can also write down AB as x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square. So there is no difference in this, or AB is equal to, you can write down, x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So there is no difference, in all these three formulas. Right? Hope you guys understood. Okay. Is there any doubt? Anyone can ask me. No doubt, sir. Okay. Now you see, like, why do I write down like x2 minus x1 and x1 minus x2 square? Are they same? Yes, they are same. You can write it down like suppose x2 minus x1 square, and you can write down x1 minus x2 square, right? Just open the square. ठीक है, square open करते हैं तो कितना होगा, x square square x2 square plus x1 square, and then this will be what, minus 2 times x1 and x2. Correct? यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो कितना होगा, x square x1 square plus x2 square and then 2 x1 x2. Is it same? Yes, they both are same. So it doesn't matter like x2 minus x1 square and x1 minus x2 square, they both are same. Okay. Is there any other trick, guys? I mean, you can say if they are, the same without showing this, without opening the formula. Is there any other method? Anyone know any other method to show, ये दिखाने के लिए कि ये दोनों सेम है, फॉर्मूला ओपन किए बिना? You can open the mic if anyone know. Hi, Digvijay. Yeah. Digvijay, it is, right? Yeah. We can also use one of the formulas which I studied earlier. I don't remember exactly, but there is one formula with the slope of the line as well. Now,
we can implement that formula here if I'm not wrong. नहीं नहीं मैंने नहीं वो अलग है, दैट इज अ कोऑर्डिनेट। मैं सिर्फ यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म पूछ रहा हूँ कि इन दोनों को हम इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि दोनों को स्क्वायर ओपन कर दिया, एक तो मेथड ये है। इज देयर एनी अदर ठीक मेथड है। कि इन दोनों को हम इक्वल प्रूव कर सकें? हाँ, then it is not possible. ओके ठीक है, लेट मी टेल यू गाइस। एक्चुअली ये सब हमें ना पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जितना भी मैंने सिलेबस देखा है अभी, उन्होंने काफी कुछ चीजें बहुत डीप पूछ रखी है। इवन ट्रिग्नोमेट्री भी उन्होंने काफी डीप पूछी हुई है बीच में। इवन दे यूज सम यू नो द सम फॉर्मूलाज आल्सो, क्योंकि मैं अभी ग्रेडेड वन नॉट ग्रेडेड वन ही ट्राई कर रहा था। ठीक है, तो मैंने देखा कि हाँ कुछ एडवांस उसमें उन्होंने पूछ रखा है। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं इसको। ये है मेरे पास राइट। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसको मैं ब्रैकेट बनाया, बड़े वाला ब्रैकेट, राइट, एंड देन कर्ली ब्रैकेट, और मैंने यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया, तो व्हाट कैन आई राइट डाउन देन इट? नेगेटिव x2 पॉजिटिव x1 और उसके स्क्वायर, राइट गाइस? नाउ अब इसको व्हाट वी कैन राइट डाउन इट? x1 माइनस x2 स्क्वायर, right? Now because this is negative, negative square is always positive, so this is positive x1 minus x2 square. So isn't it same as this? Okay, so this is same. So there are two ways you can say, okay, they both are equal. So first way is like just open the square, and the second way is like you can take the negative common one of them and then make them equal, right? Okay. Now okay, let me tell you the one example there. Okay, suppose you need to find the distance between 0, 0 and sine theta, cosine theta, right? This is the question. You need to find the distance between sine theta, cosine theta and 0, 0. Okay. This is very basic identity of the trigonometry, but you need to remember this is very basic but very effective actually. So यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, या फिर आप जैसे कहीं पे सपोज कर लो कि सपोज ये पॉइंट है साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा। ठीक है, आपने ऐसे ही परपेंडिकुलर डाला नीचे, एंड यू दिस बिकॉज दिस इज एक्स, सो दिस ये हो गया साइन थीटा, एंड दिस इज कोसाइन थीटा इज वाई, सो ये हो गया कोसाइन थीटा, राइट? एंड यू नीड टू फाइंड ए बी। ओके, यू नीड टू फाइंड ए बी। तो सेम ऐसे ही कर सकते हैं हम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरन थ्योरम लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर थीटा plus cosine square theta. And always remember, this is an identity, and this is very important identity actually. Sine square theta plus cosine square theta is equal to 1, right? So that means AB is equal, AB square is 1. That means AB is equal to 1 as well. Right, guys? So this is very important identity. So remember this always. Okay, now the midpoint formula. Midpoint formula is very easy. Like you are given the two random point. I'm just taking the x1 and y1 only. X1, y1 and x2, y2. Okay. And then you need to find the, the midpoint. Right? So midpoint coordinates will be x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. So it's something like average the x coordinate and average the y coordinate. So that will be the midpoint, right? Let me give you an example there. So suppose you have 3 and 4 and 6 and 7. Okay. You have 3 and 4 and 6 and 7. So you need to find the midpoint. So now tell me the average of the x coordinates there. So this is 3, this is 6. So that will be 3 plus 6 is what? 9. 9 divided by 2 is 4.5. 4 and 7 is what? 11. 11 divided by 2 is 5.5. So you get the midpoint as
4.5 and 5.5. Right, guys? Is there any doubt? Okay, they can give you the question of this type because ये थोड़ा सा tricky हो जाता है इसमें थोड़ा सा algebraic उसका जरूरत पड़ सॉरी geometric उसका basics का जरूरत पड़ता है कैसे suppose they give you this is an isosceles triangle. I'm just randomly putting the vertex. हो सकता है कि वो ना भी prove करें, but I'm just putting here, right? So like 2 3 2 2 and okay, let me so this is -5 -6 -6 -1 and -2 and this is 5 and 6. ठीक है उसने पूछा है कि we make a perpendicular to the line BC and that is point D. ठीक है point D, right? So what you need to tell, you need to tell what are the the coordinates of D. आपको बताना है कि वहां पे डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वहां पे कॉन्सेप्ट का जरूरत हमें पढ़ने वाला ज्योमेट्री का वो ये है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में यू कैन चेक इज इट आइसोसेलेस. अगर देखोगे तो आई थिंक ये 5 आएगी, ये भी 5 आएगी. ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा. ठीक है, बट आपको ये समझना होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में व्हेन यू मेक अ परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, ठीक है, यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर डालते हो, ठीक है, तो वो जो होता है वो उसके मिड पॉइंट पे क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है. तो उस जो अपोजिट लाइन है उसको बाइसेक्ट करता है उसकी हाइट. तो सिंपल सी बात है, अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, राइट? अगर डी मिड पॉइंट होगा तो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं हम? इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, तो कितना हो जाएगा भाई? -1 +5, ठीक है, -2 +6 और दोनों को डिवाइड कर देंगे. तो दिस इज गोइंग टू बी 2 and 2 I think, yeah. So this will be the coordinate, ठीक है, of the midpoint. Although ये भी मैंने सेम लिखा था, बट यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर करके नहीं लिए थे पॉइंट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उसका मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे. मिड पॉइंट हम निकालेंगे जहाँ पे परपेंडिकुलर डर रहा है, उसका जो वो जो पॉइंट होगा वही उसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. अंडरस्टूड गाइस? इज देयर एनी डाउट? No Okay. doubt, sir. ओके, अब जो नेक्स्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है. वो ये है कि सपोज वी हैव गिवन दिस लाइन, ये ए पॉइंट है, दैट इज यू कैन से x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2 and there is a point in between, P point, suppose we say x and y. ठीक है, अब ये P point जो है वो इस लाइन को जो हमने बनाया है AB लाइन, ठीक है, उसको आई मीन दो पार्ट में उसको डिवाइड करता है. ठीक है, सो वी अज्यूम लेट्स से दिस पॉइंट इज दिस इज M, दिस इज N. सो वो उसको M and N रेशियो के फॉर्म में इंटरनली उसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, P पॉइंट तो हमें अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए फॉर x एंड फॉर y, सो उसके क्या फॉर्मूला होता है, इसको वैसे बोलते हैं हम इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, तो उसमें x कोऑर्डिनेट जो हमारा होता है वो बड़ा सिंपल है. देखो इसको कैसे याद रखना है, m को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इधर, दिस इज m टाइम्स x2, n को मल्टीप्लाई करना है इधर, सो दैट इज प्लस n टाइम्स x1, और उसको डिवाइड कर देंगे जो दोनों रेशियो आया उनके सम से. ठीक है, सेम y को भी ऐसे ही करेंगे, विल डू द सेम थिंग, m मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस
n multiply by y1 divided by m plus n. ठीक है गाइस, तो ये एक आई मीन इम्पोर्टेंट है काफी, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड भी देख रहा था, तो काफी क्वेश्चन है वहाँ पे, 3-4 क्वेश्चन मुझे मिले देखने को, तो दीज आर द, हो सकता है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मेरे पास 2 पॉइंट हैं, 3 and 4, बी पॉइंट है -6 and 2, कोई एक पॉइंट है वहाँ पे पी, वो उनको 3 और 2 के उसमें इंटरनली उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, या उसको डिवाइड कर रहा है 3 and 2 के रेशियो में। ठीक है, तो वी नीड टू टेल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी देयर। पी के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो वी जस्ट मेक अ लाइन देयर, एक लाइन बनाते हैं ए बी। अच्छा, कोऑर्डिनेट में ना कोई भी फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करोगे ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी फेस होगी आपको। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि यू प्लॉट एंटायर थिंग, जो भी वहाँ पे है ज्योमेट्री में, उसको एक बना लो। ठीक है, सिंपल सा, और फिर सोचो कि क्या कर सकते हैं। जैसे हमने बनाया, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और देयर इज अ पॉइंट पी जो उसको 3 और 2 के रेशियो में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पी के पॉइंट चाहिए एक्स एंड वाई, सो मतलब वही चाहिए हमें जो जैसे पीछे निकाला था एक्स और वाई के डायरेक्ट पॉइंट। सो कोई बात नहीं, तो ए क्या है हमारा 3 and 4, बी क्या है हमारा -6 and -2, राइट। ठीक है, तो एक्स निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। फिर यहाँ पे 3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 से, एंड डिवाइड किससे करेंगे, दोनों के सम से। तो ये कितना आ जाएगा, 6 - 18 डिवाइड बाई 5, तो आ जाएगा -12/5। वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड डिवाइड बाई 3 + 2। सो कितना आ जाएगा, 8 - 6 आई थिंक डिवाइड बाई 5, सो आ जाएगा 2/5। सो ये पी के पॉइंट्स कितने आ गए भाई, -12 डिवाइडेड बाई 5, -12 divided by 5 and 2 divided by 5. ठीक है guys, any doubt? No. ओके, एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है ना मिड पॉइंट का, वो भी यहीं से ही आता है, राइट। वो भी यहीं से ही आता है। ठीक है, कैसे, अब मैं बता देता हूँ कैसे वो होगा, ड्राइव कैसे करते हैं, क्विकली बता देता हूँ मैं उसको। सो लेट्स सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, ये है x1 y1 और जो x2 y2। अब यहाँ पे हमें बताना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कहाँ था, वो 1 और 1 के रेशियो में उसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, वो उसको 1 और 1 के रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब बीच में से दो हिस्सों में उसको वो कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन द सेम फॉर्मूला। आपको मिड पॉइंट निकालना है, तो समझो ये उसको कर रहा है, तो एक्स और वाई, तो एक्स कितना हो जाएगा भाई, x1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 + 1, तो कितना हो गया, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। y कोऑर्डिनेट निकलेगा तो y1 मल्टीप्लाई बाई 1, सेम y2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 + 1, सेम y2 + y2 डिवाइड बाई। सो एक्चुअली जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, तो वो भी यहीं से ड्राइव होता है। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी यही है।
एक क्वेश्चन करते हैं, काफी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट दे कैन गिव यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. समवन आस्क्ड मी लास्ट एग्जांपल में y का वैल्यू कितना था. नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये नेगेटिव होगा ना, -2 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट. सो दिस विल बी -6. So 8 -6, that is 2. 8 minus 6, that is 2. So 2 by 5. No, 14 by 5. I don't think so. Okay, okay, okay. I got it. मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया. ये 2 एक्चुअली मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया. राइट. अगर हम इसको 2 लेते हैं फिर वो 14 बाई वही आएगा, 5 पे आएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा. ठीक है. राइट, नो प्रॉब्लम. ठीक है. लेट्स डू वन क्वेश्चन. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और वो दे भी सकते हैं. If A and B are -2 and -2 and 2 and -4 respectively, find the coordinates of P such that 7AP is equal to 3AB. And this is also given, P lies on the line segment AB. काफी अच्छा क्वेश्चन है. अब करना कैसे है? तो सबसे पहले जो मैंने बताया, कोई भी ज्योमेट्री प्रॉब्लम हो, कोऑर्डिनेट हो, इवन सिंपल ज्योमेट्री प्रॉब्लम हो, उसको जो आपके थॉट्स हैं, ठीक है, उसको आप पेपर पे उतार दीजिए. ठीक है. आप सोचो, आप उसको इमेजिन करो वो किस तरह का लाइन है, कैसे है, पी पॉइंट्स कहाँ पे है वहां पे, राइट. तो आपका हाफ ऑफ द डन विल बी, हाफ ऑफ द वर्क विल बी डन. सो हमने सोचा है कि दिस इज ए एंड बी, पॉइंट्स ए एंड बी, दैट इज -2 and 2, एंड दिस इज 2 and -4. ठीक है. एंड देयर इज अ पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है, उसका हमें एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स में निकालने हैं. एंड वहां पे हमें क्या गिवन है? हमें रेशियो गिवन है. किसमें? एपी एंड एबी, इसमें और कुछ नहीं. तो एपी डिवाइड बाय एबी कितना हो गया भाई? अगर आपको इसको कन्वर्ट करना हो एपी डिवाइड बाय एबी में, तो कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा रूल है. ठीक है. हमारे इंडिया में थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड फील होता है बच्चों को कि कैसे करें, बट यूएस में ये कुछ अच्छी चीजें हैं जो कि हम सीख लें तो बहुत अच्छा रहेगा. सबसे पहले तो आप अगर आपको ए बी लेके आना है डिवाइड में, तो ए बी से दोनों साइड डिवाइड कर दो. ठीक है. तो ए बी से आपने डिवाइड किया तो कितना आ गया? 7AP डिवाइड बाई ए बी. यहाँ से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज 3. अब क्या कर सकते हो आप? राइट. अब क्या कर सकते हो आप? अब क्योंकि आपको जस्ट AP बाई ए बी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, तो बट 7 इज इन द प्रोडक्ट ऑफ AP, तो 7 से भी डिवाइड कर दो दोनों साइड, कैंसिल आउट. तो AP बाई ए बी इज इक्वल टू 3/7. ठीक है. तो हमें पता चल गया AP बाई ए बी इज 3/7. सो इसका मतलब अगर ये 3 है तो ये पूरा कितना है? 7 है. अगर ये पूरा 7 है तो ये कितना हुआ? 4 हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 है. तो हमें यहाँ पे पता चल गया रेशियो AP और AB में कितने का रेशियो है? AP एंड PB. AP एंड PB में 3 and 4 का रेशियो. कैसे निकला? क्योंकि ये हमारे पास AP आया था 3 और ये टोटल कितना आया था हमारे पास? 7. सो अगर ये 3 है तो ये कितना बचा? 4 ही बचा, राइट. So we know the AP and PB ratio, and that is equal to 3:4. अब फॉर्मूला लगा दो सिंपल. तो P, X and Y हमें निकालना है. तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? -2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 + 4. ठीक है. अब Y कैसे निकालेंगे हम? Y भी -2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 + 4. ओके.
सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये इसको मल्टीप्लाई करने में, तो ये अगेन -8, सो आई थिंक दैट इज -2 डिवाइडेड बाय 7 and this is going to be what, -12 and -8, that is going to be -20, is it, by 7. So the coordinates of P are -2 by 7 and -20 by 7. Please check this guys. सब लोग इसको देख लो 30 सेकेंड 40 सेकेंड. If you have doubt, ask me. Okay. सर प्लीज वो फर्स्ट वाला पार्ट Which part? जो रेशियो वाला पार्ट हमने निकाला था. यस सर. ओके तो देखो इसमें रेशियो हम कैसे निकालेंगे. हमने व्हाट वी हैव गिवन 7 AP इज इक्वल टू 3 AB. ठीक है, आपने ये ड्रॉ कर लिया एंड अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया तो आप काफी कुछ वहां से समझ जाओगे. बट AP और AB में एक हमें वो रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें AP एंड AB का रेशियो निकालना है कितना है. तो वही मैंने बताया लाइक 7 AP इज इक्वल टू 3 AB. तो यहाँ पे अगर आप निकालते हो तो आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, या दोनों साइड AB से डिवाइड करो फर्स्ट ऑफ ऑल. सो AB से डिवाइड किया तो इधर से AB कैंसिल आउट हो गया, तो ये गया 7 AP डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू 3. ठीक है, अभी भी 7 प्रोडक्ट में इसके AP के, तो 7 से फिर से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो 3 डिवाइड बाय 7, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो AP बाई AB ये कितना हो गया 3:7 आ गया हमारे पास. यानी कि अगर A P और B, ओके सो यहाँ पे ओके P इज देयर, तो हमें पता है कि AP 3 है, AP इज 3 एंड AB इज व्हाट 7. ठीक है, तो अगर AB 7 है एंड AP इज 3 तो PB कितना बचा 4.